very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next chapter of your syllabus. The name of the chapter is Cell Structure and Functions. So, today in this session we will discuss about the new chapter of your syllabus. So before enter into the chapter, what are the concepts we will discuss in the chapter. So in the chapter we will discuss about the some important concepts like discovery of a cell, structure and the function of a cell, cytoplasm, variations of different kinds of cells, and difference between plants and animal cell. And last one concept is a cell division and growth. तो आज का सेशन, इस सेशन में हमें एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करना है. तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में हमें कौन से कंसेप्ट के बारे में सीखना है, डिस्कशन कर लेना. तो फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा डिस्कवरी ऑफ अ सेल. सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई, इसके पीछे क्या इतिहास है, इसके बारे में हमें जानना है. उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा सेल का और उसका काम कैसा रहेगा, इसके बारे में डिस्कशन करना है. उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे साइटोप्लाज्म है, एनिमल के सेल, प्लांट के सेल में क्या क्या डिफरेंस है, ये डिस्कशन कर लेंगे. सेल का डिवीजन कैसे होता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में भी हम क्या है इस चैप्टर में क्या है डिस्कशन करेंगे. तो ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस का फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर रहेगा. आपके जो एकेडमिक ईयर में जो साइंस का जो सिलेबस है लगभग 17 चैप्टर आपके सिलेबस के लिए है. तो फर्स्ट सेमेस्टर में 8 चैप्टर रहेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको 9 चैप्टर है. तो ये जो चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर का ये लास्ट चैप्टर है. चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं. So today in this session we will discuss about the what is the meaning of a cell, what is the meaning of a tissue, organ and the organ system. So let's start today's session. The first one concept is what is the meaning of a cell. Cell का meaning क्या है, a defined cell. The basic structural and the functional unit of a life is called as a cell. The basic structural and the function unit of all living organism is called as a cell. So we know that approximately 7 millions of animal species are present on the Earth's surface, and all these living organisms are made with the help of different kinds of tissues. And the structural and the functional unit of each and every living organism that is present on the earth is called as the cell. Take one simple example. When we construct one building, we take a simple example. When we construct one wall of our building, there are different kinds of bricks are you are using. तो हम जब भी एक बिल्डिंग में अपना वॉल बनाते हैं, वॉल बनाते समय जिस तरह से हमें ब्रिक्स लगते हैं, इसी तरह हमारा जो बॉडी है वो किससे बने से बोले तो सेल से बने से. Understand? The basic structure and the function unit of all a living organism is called as the cell. The body of an organism is made of one or more cells. There are huge diversity of a living organism in the universe. The body of each and every living organism is made with the help of cells. Some living organisms are unicellular, some are multicellular. तो 7 million एनिमल स्पीसीज जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, उनमें कुछ एनिमल्स की जो बॉडी है वो किससे बड़ी से बोले तो विद द हेल्प ऑफ ओनली सिंगल सेल, विद द हेल्प ऑफ ओनली मल्टीपल सेल्स. कुछ एनिमल्स के बॉडी में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, कुछ एनिमल्स के बॉडी में क्या होता है सिंगल सेल्स. Some are unicellular, some are multicellular.
An organism whose body is made with the help of only single cell is called as the unicellular organism. जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंगल सेल से बनी सो है उसको हमें क्या कहना बोले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. टेक एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अमीबा पैरासाइट. जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंगल सेल से बनी सो है उसको हमें क्या कहना बोले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहना है. एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड ऑफ मोर देन वन सेल. जिन ऑर्गेन्स की बॉडी बहुत सारे ऐसे सेल से बनी सो है उसको हमें क्या कहना बोले तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Listen, an organism whose body made with the help of only single cell is called as the unicellular organism. An organism whose body is made with the help of more than one cell is called as the multicellular organism. Take example of multicellular organism is human beings, plants, and the animals. Now see, let's consider the tissue. What is the meaning of a tissue? A group of a similar cell performing specific function is called as the tissue. When number of cells are combined to each other, make one tissue. A group of a cell performing a specific function is called as the tissue. तो बहुत सारे सेल एक साथ कंबाइन होते हैं. कंबाइन होने के बाद एक स्पेशल काइंड का फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. उसको हमें क्या करना है? टिश्यू करना है. A group of a single tissue is called as the organ. So we know that human body is a wonderful machine. Our body consists of several organs. Each organ is having the different name and the different function. हमारा जो बॉडी है एक वंडरफुल मशीन है. इस मशीन में अलग अलग प्रकार से क्या बोलते बॉडी के पास. टेक एग्जांपल ऑफ नाउ योर हैंड्स, योर लेग्स, योर लिप्स, योर चीक्स, योर हैंड्स, योर स्टमक. So each organ having the different name and the different function. तो हर एक बॉडी पार्ट्स को उसका अलग नाम है, उसका अलग काम है. तो हमारे ऑर्गन कैसे बने सो ध्यान में रखिए. ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू मेक वन ऑर्गन. हमारी बॉडी का जो हैंड है, जो लेग है, चाहे नोज हो, एयर्स हो, जो ऑर्गन्स है, जब सिमिलर टिश्यू एक साथ आते हैं, एक साथ आने के बाद ये क्या तो एक ऑर्गन क्या है रेडी होता है. नेक्स्ट वन, ऑर्गन सिस्टम. ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन वर्किंग together is called as the organ system. In our body, there are different kinds of the systems are working. When different kinds of organs combine to each other to perform work, तो बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आकर एक अच्छा काम करते हैं, कंटिन्यूसली वो काम करते हैं. उसको हमें क्या कहना है? ऑर्गन सिस्टम कहना है. A group of different organs working together. Different organ working together is called as the organ system. Our body is one of the organ system. There are several organs combined with each other and working together is called as a organ system. Understand? For the meaning of a cell, tissue, organ system, unicellular, the multicellular. We know that the huge diversity of a living organism on the earth's surface, and all these living organisms are made with the help of only cells. In the universe, some organisms are unicellular, some organisms are multicellular. An organism whose body made with the help of only single cell is called as the unicellular. An organism whose body is made with the help of multi-cells is called as the multicellular organism. जिन organisms की body single cell से बनी सो है उसको हमें क्या कहना है? यूनिसेलुलर कहना है. जिसकी बॉडी मल्टी सेल से बनी से उसको हमें क्या कहना है? मल्टीसेलुलर. Now see, group of cells is called as a tissue, and different organs making one organ system. A group of different organs working together is called as the organ system. Listen, ये terms आपको ध्यान में रखना होता है जरूर. Now see, the first one concept of our chapter is discovery of a cell. Discovery of a cell.
discovery of a cell. Now see, in 1665, English scientist Robert Hooke saw many boxes like structures while observing a slice of a quark under his microscope. Now see, in 1665, English scientist Robert Hooke saw the many boxes like a structure while observing the slice of a quark in the microscope. तो सो लॉस ऑफ इंटरेस्ट में इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने जो क्वार्क का स्लाइस रहता है वो माइक्रोस्कोप के देखने के बाद उसको क्या होता है डिफरेंस का इसके क्या है बॉक्सेस नजर आए. दिस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर वेर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पार्टीशंस और वॉल एंड गिव ए हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस. तो उनके ऊपर क्या बोलते हैं हनीकॉम्ब की तरह उनके क्या है स्ट्रक्चर क्या है दिखने लगा. हुक नेम्ड दिस बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स एज अ सेल. जो उस बॉक्सेस को उन्होंने क्या नाम दिया बोले तो सेल बोल के नाम दिया है. The word cell is derived from the Latin word cellula meaning chambers. What Hooke observed were actually dead cells. जब उन्होंने ऑब्जर्व किया with the help of a microscope, the different kinds of the boxes are seen in this quark. एक जो क्वार्क रहता है उस क्वार्क का जो स्लाइस रहता है उसके ऊपर उन्होंने माइक्रोस्कोप देखने के बाद उसको क्या तो अलग अलग बॉक्सेस नजर आए. उसी को उन्होंने क्या नाम दिया बोलो तो सेल नाम दिया है. फर्दर detailed study of a cell was made possible only about 150 years later when powerful microscopes were invented. Now see, after the invention of a cell, approximately 150 years later, when powerful microscopes were invented, जब powerful microscope invention हुई, invention होने के बाद 150 साल बाद फिर से क्या तो सेल्स के बारे में क्या है डिटेल स्टडी क्या है हो चुकी थी. Anton van Leeuwenhoek for the first time observed the living cell using improved microscope. Now see, Leeuwenhoek ने क्या किया तो living cells के बारे में क्या है उन्हें स्टडी किया. It's the discovery of a cell. Now see, variation, number, shape and the size of a cell. अब डिस्कशन कर लेंगे variation in cells, variation in number, shape and size. Variation in number, shape and size. Now see, cells of organisms show variations in number, shape and size. Now see, cells of an organism shows the variation in shape, size in a number. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स है उनमें बहुत सारे ऐसे वेरिएशन है उसमें साइज में हो उनके नंबर में हो और उनके शेप में हो अलग अलग क्या है उनका तो क्या है वेरिएशन. सो वेरिएशन नंबर तो फर्स्ट हम डिस्कशन कर लेंगे वेरिएशन इन नंबर. Variation in a number. Body of an organism may be made of one or more cells. Now see, body of an organism may be made of one or many cells. जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बड़ी से हो वो एक सेल या उससे भी ज्यादा सेल से क्या हो तो बड़ी से हो. Those organism whose body is made of a single only cell are called other twin cell. अभी हमने डिस्कशन किया. Those organism whose body is made with the help of only single cell is called the unicellular organism, like an example of amoeba, paramecium. Now see, यहाँ पर आपको example दिए सो है organisms uni means one cellular cell. Example amoeba, paramecium, vivrion, etc. In such an organism, a single cell perform all necessary functions like movement, feeding, respiration, reproduction. Now see. An organism whose body is made with the help of only single cell, such kind of organism, a single cell perform all the necessary functions like movement, reproduction, respiration, and the feeding. अमीबा, पैरामेसियम, इग्लिना में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सिंगल सेल रहता है. वही सिंगल सेल उनकी बॉडी का ऑल फंक्शन परफॉर्म करता है. मूवमेंट कर देना, रिप्रोडक्शन कर लेना, फीडिंग कर देना, रेस्पिरेशन कर लेना. All the activities and the performance of a body is mainly depending upon the only single cell that is present in the unicellular organism.
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल रहती है वही उनकी बॉडी में ऑल फंक्शंस क्या बोले तो परफॉर्म करती है, चाहे उनका मूवमेंट हो, चाहे उनका फीडिंग हो, चाहे उनका एक्सपायरेशन हो या रिप्रोडक्शन। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ओनली सिंगल सेल। Understand? Now, see next one. Those organisms whose body is made of more than one cell, many cells are called as a multicellular. Multi means many. Example: most plants and animals, including the human beings. जिन ऑर्गन्स की बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी सो है, मल्टी सेल से बनी सो है, उसको हमें क्या कहना बोलो तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहना है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल, नाउ टेक द एनिमल्स, प्लांट्स एंड द human beings. In such an organism, group of specialized cells perform a different function necessary for life. Now, in multicellular organism, group of specialized cells perform the specific functions necessary for the life. Now, see, for the continuation of a life, there are different kinds of special kind of cells performing their special functions. So, we know that mitochondria is called as the powerhouse of a cell. इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, वो सेल को क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर करता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। ध्यान में रखिए, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड द टिश्यू। एक प्रकार के सेल एक साथ आ जाना, एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करना, उसको हमें क्या कहना है तो टिश्यू कहना है। ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड द ऑर्गन। Different organs work together is called the organ system. एक प्रकार की सेल, ध्यान में रखिए, group of cells is called as a tissue. Understand? When similar cells combine to each other to perform a specific function is called as a tissue. Understand? And group of a similar tissue. Understand? Group of a similar tissue perform a specific function is called as a organ. Understand? Group of a similar tissue perform a specific function is called as the organ. Different organ work together is called as a organ system. Understand? Different kinds of organ combine या ध्यान में रखिए, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन एक साथ रेडी हो जाना और वर्क एक साथ करना, उसको हमें क्या करना है ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन combine to each other perform good function is called as the organ system. Listen, different organs work together. अलग अलग organs एक साथ combine हो जाना और work together करना, उसको हमें क्या कहना है organ system। Various organ systems together make up an organism. Done में various organ system किस तरह से ऑर्गेनिज्म रेडी होता है, ध्यान में रखिए। So we then go flow chart to easily understand. Different organ system together make up an organism. Different organ systems एक साथ आते हैं, आने के बाद एक ऑर्गेनिज्म का तो रेडी होता है। Now see, cells, tissues, organs, organ systems and organism. Organ system and organism. एक ऑर्गेनिज्म कब रेडी होता है, ध्यान में रखिए, जब सिमिलर सेल्स एक साथ आएंगे टिश्यू रेडी होंगे, तो सिमिलर टिश्यू एक साथ आएंगे ऑर्गन रेडी होगा। डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम रेडी होगा। एक ऑर्गन सिस्टम रेडी होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म क्या हो तो रेडी हो सकता है। अंडरस्टैंड? एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से फॉर्म होता है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। नाउ सी द वेरिएशन इन शेप। अब तक हमने पढ़ा वेरिएशन इन नंबर, नाउ डिस्कस अबाउट द वेरिएशन इन द शेप। वेरिएशन इन शेप,
variation in shape. Now see. Cells have many shapes depending upon the functions they perform. Now see. Cells have many shapes and the shapes of the cell is depending upon the functions they perform. वो किस तरह से functions perform करते हैं इसके आधार के ऊपर सेल का क्या होता है shape. The shape of the cells are mainly depending upon the how they perform their function. वो किस तरह से functions को perform करते हैं इसके आधार के ऊपर उनका क्या होता है shape है. Cells of amoeba and WBC are irregular in shape. ध्यान में रखिए. The cells of amoeba जो अमीबा के सेल्स है और WBC सेल्स है वो क्या रहेंगे इरेगुलर इन शेप. उनका क्या रहेगा इरेगुलर इन शेप. Cells of amoeba and WBC are irregular in shape. Now see, muscle cells are spindle shape. हमारे जो मसल सेल्स रहते हैं वो क्या रहेंगे तो स्पिंडल शेप रहेंगे. Muscle cells are spindle shape. Spindle shape. Understand? Let's now see. Red blood cells are humans are spherical. Red blood cells कैसे रहेंगे? Spherical. Red blood cells are spherical. Spherical रहेंगे. Next now, nerve cells are elongated. Nerve cells are elongated. Elongated. Now see, skin cells are flat. Skin cells are flat. Now see, special shapes of ova and sponge. Special shapes of ova and sponge. Listen, these are the variation in a shape. तो सेल का जो ध्यान में रखिए, cells have many shapes depending upon the function they perform. सेल्स अपना फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं उनके आधार के ऊपर उनका क्या होता है शेप डिपेंड. ध्यान में रखिए, जो अमीबा है और WBC सेल्स है उनका शेप क्या रहेगा इरेगुलर शेप. Understand? The cells of amoeba and WBC that is present in our body is in an irregular shape. Now see, muscle cells are the spindle shape. जो हमारे मसल्स में सेल्स रहेंगे उनका शेप कैसा रहेगा तो स्पिंडल शेप रहेगा. नाउ रेड ब्लड सेल्स आर द स्फेरिकल सेल्स. जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है उनका शेप कैसा रहेगा तो स्फेरिकल रहेगा. नर्व सेल का कैसा रहेगा एलोंगेटेड. नर्व सेल्स से वो क्या रहेंगे वो तो एलोंगेटेड रहेंगे. नेक्स्ट द स्किन सेल्स आर द फ्लैट. स्किन में जो सेल्स है अपने कैसे रहेंगे वो फ्लैट रहेंगे. लास्ट वन इज जो सेल्स हमारे ओवा में और स्पर्म में रहते हैं उनका क्या हो तो स्पेशल क्या है शेप रहता है. The cells that is present in the sperm and the ova of a female is a special kind of a shape. उनका क्या रहेगा वो तो स्पेशल काइंड का क्या रहेगा शेप रहेगा. आप देखते हैं वेरिएशन इन साइज. Now see next one, variation in a size. अब तक हमने देखा variation in number, now see variation in a size. Variation in a size. Generally, cells are microscopic and cannot see with the naked eyes. We can't see the cells with the proper naked eyes. We can see with the proper only microscope. The size of the cells varies from a micrometer to a few centimeters. Now see. The size of the cells are vary from the micrometer to centimeter. The size of a cells varies from a micrometer to centimeter. Micrometer to centimeter. The
सेल का जो साइज है कहाँ से वेरी होता है, वो तो फ्रॉम माइक्रोमीटर टू सेंटीमीटर. The smallest cells are those of a bacteria having the size of 0.1 to 0.5 micrometer. तो स्मॉलेस्ट सेल है बैक्टीरिया का जो सेल्स है उसका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, तो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया में स्मॉलेस्ट सेल रहते हैं उसका क्या रहेगा बोलो तो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर. ये सबसे स्मॉल सेल है. नाउ सी द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच का जो एग है, ऑस्ट्रिच के एग का जो साइज रहेगा, ऑस्ट्रिच सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच द साइज ऑफ कितना रहेगा, वो तो उसका 170 माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर. तो ऑस्ट्रिच का जो एग रहेगा उसमें जो सेल्स रहेंगे उसका साइज क्या रहेगा, इतना रहेगा. नाउ सी cell size has no relation with the size of an organism. Cell size has no relation with the size of an organism. For example, elephant has more cell as compared to the rat, but the size of the cell in elephant is not much bigger than that of a rat. Now, elephant has more cell than the rat. हाथी और स्नेक का एग्जांपल लेते हैं तो एलिफेंट में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, रैट में कम रहते हैं, लेकिन साइज उनका क्या रहेगा, तो सेम रहेगा. ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा है उसमें उसका साइज बहुत बड़ा रहेगा, ऐसा नहीं. इन ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट सेल्स एंड द नर्वस सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल्स. ध्यान में रखिए हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स क्या बोलते तो सबसे स्मॉल रहेंगे और नर्वस सेल्स क्या बोलते तो सबसे क्या बोलते तो ज़्यादा रहेंगे. लिसन ओके, we'll stop here. We'll continue on the next session. Stay safe, stay indoors from Universal Public School or Shanti.